हेलो गाइस। तो अब हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो विच इज बेस्ड ऑन दिस बुक। इफ यू कैन रीड दिस, सो बेसिकली इट इज हाउ टू रीअसेस योर चेस फोर्थ एडिशन. So as we know that, like, a lot of people know few opening lines, right, and then few basic end game things, and as well as some uh, basically mating patterns. तो वो तो सीख जाते हैं लोग आसानी से. बट उसके बाद क्या? The most difficult thing in the chess, I would say, is like middle game, where you have a lot of pieces and you have to come up with a plan depending on the basically positional requirement of the board, right? So for that, this book teaches you something called as imbalance oriented plan. So first of all, you have to understand uh, what are the imbalances that are there on the chessboard, and then based on that you have to devise your plan. अब imbalance क्या होता है, right? So that is another thing. So imbalance is basically any significant difference between the two respective position. Like अगर आप white खेल रहे हो, वो black खेल रहा है, इन दोनों की पोजीशन में क्या क्या differences है, right? Important differences. So that is, and based on that only we should come up with some plan, right, to follow. And उसके बाद हमारा हर move should be in accordance with that plan, right, to achieve that plan. Or it should not be something like he's threatening something and then I just keep responding to threat. Or due to my aggression, like if I'm aggressive player, I just keep making one or two more threats, right? So like एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बिगनर बहुत लोग सिंपल अगर चेक अवेलेबल है तो चेक देने का कोशिश करेगा. बट उससे क्या होगा? आई कैन जस्ट से डेवलप सम पीसेस एंड ब्लॉक योर चेक. तो उससे तो मेरा डेवलपमेंट ही इम्प्रूव हुआ ना. तो वी शुड अवॉइड दैट. एंड फिर हमारा पोजीशन को डिफरेंसेस को समझ के उस हिसाब से हमको मतलब बेसिकली ये बुक बोलता है कि उस हिसाब से कम अप विथ योर प्लान, राइट, एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट प्लान. अब उसके लिए हमको इम्बैलेंस समझना पड़ेगा, राइट. तो इसमें हम इस वीडियो में हम शॉर्ट रखेंगे, ठीक है. जैसे सोचे कि स्टार्ट आज देते हैं कि क्या क्या होता है इम्बैलेंस, ठीक है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे करके उसको हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पे. So if I go to, okay, I'm sharing this part, right? So just quickly go to this pigeon from this book. So ये book का pigeon है. Well, if you see, there's nothing but that same book pigeon. So it's easier to read, right? So here the different type of imbalances that are explained here is like superior minor pieces. तो यहाँ पे सुपीरियर माइनर पीसेस में क्या हो गया? आपका माइनर पीसेस क्या है पहले तो वो समझना है. तो आपको माइनर पीसेस आ जाएगा, बिशॉप है, नाइट है, राइट. सो दो आर ओनली दोज टू आर द एक्चुअली माइनर पीसेस, राइट, बिकॉज क्वीन एंड किंग आर मेजर पीस. हाँ, तो इन दैट हम लोग will understand when bishop is superior, when knight is superior, right, with certain examples in my upcoming videos on this series. Then we'll understand pawn structure, like what are weak pawns, right, जो कि like if some pawn is isolated, right, that could be weak. Backward pawn, right, जिसके कोई defense नहीं है, some pawn cannot defend that the pawn, so those pawn are considered weak. Same thing for isolated, right. Isolated pawn is also like a pawn uh, which doesn't have surrounding pawns on the surrounding files basically, right, so वो isolated हो जाएगा. Since there is no surrounding pawns, that pawn cannot be defended by another pawn. So that's why it is weak. Similarly for backward pawn. Backward pawn is like इसका साथी pawn or the adjacent pawn move ahead, but it remain backward. And इसके बैक साइड में कोई pawn नहीं है जो इसको डिफेंड कर पाएगा. That becomes a backward pawn. So those are kind of weak pawns, right? So pawn structure में you'll see different type of weak pawn and pawn chains, right? Those things also I'll try to cover. Then you have space. तो एक another imbalance है कि space का advantage होना है. Like if your pawns have moved forward significantly, right, then your pieces have a lot of mobility, right. It can uh, keep moving around these pawns, right, within those pawns. Like pawn is giving them some shelter and some space, so that will have advantage. And you'll have superior piece mobility. If someone doesn't have a pawn advantage, so uske pieces will be cramped, like or different pieces will be fighting for same square. So that is like your space advantage. Then your material advantage.
So material advantage is like basically you have one extra pawn or one extra bishop, or let's say you have exchange, you are exchange up, meaning that uh, you have lost a knight or bishop, but you have gained opponent's rook, right? So that way you are exchange up. So that could be another advantage, right? Which we will cover in material advantage. Then control of a key file है. So key file is like basically open file. Open file is like जिसमें ना आपका pawn है ना opponent का pawn है उस file पे. That is like open file. So rook belong on open file. Similarly, rook, if there is no such open file, then second best place will be semi-open file, meaning that आपका pawn उस basically आपका pawn उस file पे नहीं है, opponent का है, then we can place a rook and we can target that pawn. So those are the key file, okay? And control of a key file is basically rook belong on those key files. Then you have a control of a whole or weak square, right? And whole is basically जब pawn एक move forward करता है, right? Then it leaves some spaces behind which it was controlling. So we'll see some example here. Let's say I open this control of a key file वाला, okay? अब इसमें let me open this, right? And then let me show you what I opened right now. Let's assume this, okay? So इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे उसमें, तो यहाँ पे एक E6 पे अपना होल है. E6 में अगर हमारे पास नाइट होता तो हम अपना नाइट वहाँ प्लेस करते, तो एनी पॉन कुड नॉट हैव बेसिकली चैलेंज दैट नाइट, राइट? क्यों? क्योंकि इसका जो नाइट है, लाइक अगर यहाँ पे मेरा नाइट होता, उसके पॉन मान लो यहाँ पे होता D7 पे या F7 पे, तो उससे वो अपने मेरा नाइट को ले सकता था, राइट? बट वो D7 का पॉन क्या हुआ, D6 मूव हो गया. F7 का पॉन क्या हुआ, F5 पे मूव हो गया. अब इसको कंट्रोल करने वाला, E6 को कंट्रोल करने के लिए कोई भी, आप देखोगे तो E6 को कंट्रोल करने के लिए कोई भी पॉन नहीं है. तो वैसे स्क्वायर्स को होल्स बोलते हैं जनरली, और उस पर अपना नाइट, इट कुड बी वेरी गुड प्लेस फॉर आवर नाइट्स, राइट? तो उसको आउटपोस्ट जनरली बोला जाता है. देन वो हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में, राइट? और उसके उसके अलावा अगर आप देखो तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं. लेट मी क्विकली गो बैक टू दैट स्क्रीन, राइट? तो हाँ, हम यही बोल रहे थे कि उसके अलावा हम सीखने वाले हैं लीड इन डेवलपमेंट. लीड इन डेवलपमेंट क्या होगा कि वो अपना से ओपनिंग में हम लोग अपने पीसेस को क्विकली डेवलप कर रहे हैं, मतलब हर हर एक चाल में हम लोग एक न्यू पेस को मूव कर रहे हैं, और से वो क्विकली क्वीन से अटैक कर रहे हैं, कीप मूविंग द क्वीन अराउंड. तो हम लोग अपना से डेवलपमेंट के साथ साथ उसको उसकी क्वीन को अटैक करेंगे, और हम लोग अपना नया पीस लाते जाएंगे, तो हम लोग का डेवलपमेंट क्विक होगा. तो हम लोग को एक लीड मिलेगा, हम लोग का ज़्यादा पीसेस और ज़्यादा सेना हम लोग का फील्ड में उतर चुका है अटैक के लिए, और वो उसका लाइक स्टिल इट्स ऑन द बैक रैंक ओनली इस पीसेस. तो वो सब सिनेरियो हम लोग देखेंगे, वो भी एक टाइप ऑफ इम्बैलेंस है. तो ये बेसिकली हम आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ इम्बैलेंसेस. देन वी हैव किंग सेफ्टी. तो से हमारा किंग का जो 3 पॉन्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो 3 पॉन्स है वो अगर प्रॉपरली मतलब मूव नहीं हुए हैं, ओके, और से सम नाइट इज देयर, राइट, और सम बिशॉप इज देयर, ओके. तो इफ दोज थिंग्स आर देयर, तो वो अपना किंग के अराउंड सम पीसेस है, ये रुक है, तो किंग प्रॉपरली सेफ है. बट से जो किंग के अराउंड पीसेस नहीं दिख रहे हैं, राइट? so it's easier for our pieces to outnumber around king. तो और उस पर एक अटैक बन सकता है, राइट? तो किंग सेफ्टी देखना पड़ेगा, राइट? तो वो हम लोग देखेंगे किंग किंग सेफ्टी, किसका किंग ज़्यादा सेफ है. अगर उसका सेफ नहीं है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान बना सकते हैं. एंड देर इज ऑल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इज लाइक कॉलिंग योर शॉट्स. तो बेसिकली वी वांट टू डू व्हाट वी वांट टू डू rather देन लाइक अगर वो कोई चीज़ अटैक कर रहा है और बोल रहा है कि यू हैव टू प्ले दिस मूव टू डिफेंड योर थिंग, विल से नो वी वांट टू डू काउंटर अटैक. So basically calling our on shots. Okay, and then we have static versus dynamic. So it's like battle between short term and long term imbalances
तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको सिंपल भाषा में। स्टैटिक्स वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक्स में क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच रहे हो, राइट। जैसे आपका बेहतर पाउंड स्ट्रक्चर है, आपका कोई वीक पाउंड नहीं है, राइट, ऑल द पाउंड्स आर कनेक्टेड, और से यू हैव वन एक्स्ट्रा पाउंड, तो ये लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है, राइट। और डायनेमिक में क्या होता है कि आपका लीड इन डेवलपमेंट है, कि आपने एक्स्ट्रा पीसेस आपने डेवलप कर लिया है। तो अगर आप तुरंत एडवांटेज नहीं लोगे, लाइक तुरंत अटैक के लिए नहीं जाओगे या थ्रेट कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो वो भी अल्टीमेटली पीसेस को डेवलप कर ही लेगा। से क्लोज पोजीशन में है, क्लोज पोजीशन में क्या होता है, उसके पास बहुत टाइम रहेगा, वो धीरे धीरे वो भी डेवलप कर लेगा, एंड इल कैच अप टू यू। So then your advantage is gone. So dynamic advantage is like short term advantage. Based on that, you have to take quick action. So these are the few things that I'll be covering. Okay. So I'll be reading the books, and I'll be. So I have read few chapters already, but I'll reread, and will try to create videos so that I also remember this concept better, and as well as you guys, if you have not read this book, and if you want to learn how to do planning in a middle game, like come up with a right plan, rather than just giving up to your fear or your aggressive mentality and coming out with some random moves, right? So we'll go with a plan way. If you want to learn that, you can follow my channel and like these videos basically, right? So that it gives me motivation to keep coming up with some such videos in future. Okay. So since this was an introduction video, I wanted to make it as short as possible, right? So it's a 10 minutes. So now from here on, we'll start the longer videos, right? Okay. So that's pretty much it. Thanks, guys. Thanks, everyone.